Okay, yes, so let's get started. And I hope everyone has installed the R Studio. सबने installed that? Okay, so that's the prerequisite for today's session. Recording in progress. Okay, so please go on mute. Please check who is unmuted. Go on mute, please. Start the lab. Check on mute there. Okay. Everyone is on mute. Okay, ठीक है, fair enough. Guys, open it and tell me सबका framework कैसा दिख रहा है? So यहाँ पे in my you can see lot of untitled, whatever. So for example, if you want to open a new thing, go to file and say new file R script. Can you notice untitled 7 is now? Correct. So this is where you will do your coding. So you should have 4 panels. सबके में 4 panels आ रहे हैं? 4 panels. So the top one, the top left, we will do our coding, whatever you want to do. So for example, 10 plus 9. And in the below one, you will get your answers. This one will show you history, environment, connections, or any tutorials are there, whatever. And the last, the bottom right, would be used for your plots or other things. So as of now, there is no use of the bottom right, but if I use, then I'll let you know. Okay. So now how do I execute the code in R? So basically, before we start with R, thoda sa background build kar dete hain. So let's say some 4 years back, R was a primary language, but now probably people have just moved towards our Python. Okay, and you will see that not many projects are being run in R. Most of the people or most of the industries, and actually all the new projects are being launched in Python only. But whatever you can do in Python or whatever was done in R probably is done in Python also. But the problem in R is, I'll not say problem, but the way R has been designed is that for everything, you need to import a library. So for example, let me say when you are building your any data science model, everything you are getting from Skynner, correct? Or for NLP, you are getting from everything from NLTK, right? But यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. For there are few functions which are inbuilt, but then for most of them, you may have to keep on importing or installing some packages or libraries. That is what drawback. And there is no package or library in R which is as powerful as pandas or as powerful as your NumPy or sklearn. The same thing can be done, but with different installations. ठीक है? वैसे तो R is the first thing which I have used in my career in data science, but हाँ अब R use करे हुए बहुत time हो गया ऐसा लगता है मेरे को, ठीक है? But after learning Python, you will feel that R is very simple. It is even simpler than Python. Okay. And there are many common things between R and Python. For example, your data frames, your arrays, your list, all these things are almost same. The way you write your for loop, the way you write your if conditions are almost same. The way you define your functions are same. Okay. Plots also, the way you get your plots are also almost same. Okay. So our focus would be to see, to get little bit comfort in our R.
So can we get started, guys? So चलो, let's start from our basic mathematical operations. Same है, करके देख लो. 10 plus, let me say 3, so plus symbol. And now how do you execute a code? Execute a code, Python में कैसे execute करते थे? There were 3 ways: shift enter, control enter, and run button था. So same thing over here. Select everything and press your run button. Can you see this run button? Answer आ जाता है. ठीक है. अगर run button का मन नहीं है, then you can do your control enter also. ठीक है. So after doing lot of coding, you will see that your console will keep on getting filled up. Console को clear करना है तो कैसे करोगे? Same thing, Control L. करके देखो please. Control L and it should clear your console. Clear हो रहा है? Can you notice one checkbox over here? Source on save. यहाँ पे दिखता है. So please check this source. इसको tick on कर दो so that even if your R hangs or कुछ problem हो जाता है, your code is still not lost. Okay. You should not lose your code. Source on save. Those who are in online, guys, please confirm. I forgot to check. Am I audible? Yes, sir. Okay. Thanks, Amol, for confirming. So most of the functions are same. If you want to do the subtraction, you can subtract it. If you want to divide it. If you want to multiply this. There are no changes. सब कुछ almost वही है. One good thing is that R is also case sensitive. How do you put a comment? The way you put comment in Python, the way you put comment in SQL is same. So this is your comment. Okay, no changes. And one more similarity between R and Python is that R is also case sensitive. So capital A and small a are two different variables. So let me say A equal to 10. And if I say A, then I should be able to see the value of A. 10 आ जाता है. But if I say capital A, probably I may get an error. Object A not found. So A, इसको please याद रख लेना that R is case sensitive. Like Python, no changes. क्या SQL case sensitive होते? No. ठीक है. R is case sensitive. SQL case sensitive नहीं होता है, but बहुत सारे SQL case sensitive होते हैं. For example, if you are writing a query in on AWS, वो case sensitive आएगा. At least data case sensitive आएगा. Function sensitive नहीं आएगी. ठीक है. So R is case sensitive. Now one, so अगर तुम्हें R में काम करने को मिलता है, वैसे भगवान करे ना मिले, ठीक है, बट कभी मौका आया करना पड़ा, तो you might see people doing something like this. So let me say they say a variable 1 is equal to, let me say R class, or let me say Sunday. आज Sunday है नहीं है. So now if you want to see the value of variable 1, you would be able to see the value of variable 1. Now if I say variable 2 and if I write Sunday, that is also same. So basically what I want to highlight is that this arrow symbol and equal to are same thing. ठीक है, ये arrow symbol और equal to दोनों एक ही चीज हैं R में. ठीक है. So R was basically designed for people who were there in data science but probably did not know much of programming language. तो उनके लिए ये arrow symbol ज्यादा अच्छा था. So this value getting assigned to this thing. ठीक है. So again I am repeating, equal to and arrow they are same. So कभी मेरा हाथ equal to कर देगा, कभी मेरे हाथ से arrow symbol निकलेगा. So don't think कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. ठीक है.
कभी इंडिया को इंडिया बुला लिया या भारत बुला लिया, एक ही चीज है वैसा, ठीक है, कोई फर्क नहीं। So if you want to see the value of variable 2, you can see it. Okay. So equal to and arrow symbol are one and the same thing, no changes. अब एक अलग सा फंक्शन आता हुआ दिखेगा। ये क्या कर रहा है लास्ट वाला, पावर निकाल रहा है। व्हाट इज द सिंबल नोन एज, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, कैरेट है, दिस इज अ कैरेट सिंबल, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर योर पावर। सो सेम थिंग कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर योर अंडरस्कोर। So for example, if I say 36 caret 0.5, I should get answer as 6. Okay, so this is your caret symbol, but it is used to find your power. So I'll go slow today. Done? When you guys were learning Python, तो बहुत लोग बोलते थे I am new to programming language, but अब कोई ये बोल नहीं सकता, ठीक है, कि that I am new to programming language, because तुम already एक language सीख चुके हो. So many of things which were very new to you when you were learning Python, वैसे क्वेश्चन अब शायद नहीं आने चाहिए, that is my expectation, ठीक है, because now you are not new to any programming language, you at least know one programming language. आगे बढ़े. Okay, now so basically the way I'll take R is I'll keep on drawing the parallel between your R and Python, and wherever the changes are there, that also I'll keep on highlighting. So जब हमें पावर निकालना रहता था तो पाइथन में कैसे निकालते थे पावर, डबल स्टार लगाते थे, राइट, डबल स्टार. सो इन पाइथन में हम डबल स्टार लगाते थे, करेक्ट. So let me say 10 percentage 3. Let's see what happens. ये क्या कर रहा है, रिमाइंडर दे रहा है, राइट, और यू कैन से मॉडुलस रिमाइंडर दे रहा है. चले आगे बढ़े. So let me say एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20. सो क्या a एंड b की वैल्यू सेम है? सो इफ आई से a ग्रेटर देन b, तो क्या आंसर आना चाहिए? तो फॉल्स आ गया, ठीक है. सो बेसिकली नाउ आई एम डिस्कसिंग द कंपैरिजन ऑपरेटर. सो a less than b, what should I get? True. Now do you notice one thing, one difference? So true and false are same, okay, but Python में जो false आता था वो उसमें सिर्फ कैपिटल F था and ALSE स्मॉल था. यहाँ पे पूरा कैपिटल है, ये चीज ध्यान रखिए. In Python the true was written with capital T and RUE was small. यहाँ पे it is capital, total capital, right? कोई प्रॉब्लम? थोड़ा टाइम पे आया करो यार, 10 बजे की क्लास में, 10:30 की क्लास में 11 बजे की उठा रहा हो, ठीक है. नाउ a इक्वल टू b क्या आना चाहिए? फॉल्स.
right? And now this one thing is clear that people, I hope people understand what is the difference between double equal to and what is the difference between single equal to, right? Single equal to is for assignment, you assign the value. Double equal to is for your comparison. Double equal to is for your comparison. It will compare whether A is equal to B or not. Let me say A, or let me say B greater than or equal to A. What should I get? Should I get true or false? True आ जाना चाहिए, because 20 is greater than or equal to 10. Similarly, if I say B less than or equal to A, क्या जाना चाहिए? False आ जाना चाहिए, because 20 is not less than or equal to 10. Last line क्या आना चाहिए आंसर? True. So exclamation mark equal to, it is a symbol for not equal to. So is 20 not equal to 10? Answer is yes, true, obviously. एक नजर मैं इसमें डाल लेता हूँ. So till this point, what I have done, I have assigned only a single value. In a variable, I have assigned. So before I move any ahead, let me say, how do I print a value? For printing a value, I use this thing. ठीक? Python में भी ऐसे ही था, and Python में print function भी था. So exactly same. So same. Now let's say assign more than one value to a single variable. Assigning more than one value to a single variable. So let me say variable 4, and I want to assign something. Let me say, let's assign some numbers. कुछ भी numbers डाल दो और run करो. जरा run तो करो सब लोग. देखो क्या error आता है. अनएक्सपेक्टेड कुछ आता है ना. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आर में ना एरर में से जल्दी समझ नहीं आएगा, विद एक्सपीरियंस ही समझ में आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम. नाउ I don't know why they have designed like this, but it has been designed like this. So at line number 35, do you notice I'm trying to assign more than one value to a single variable? And obviously it is giving an error. What does it need this? It needs the C over there. C stands for your combine, not compare.
C stands for combine and ये छोटा c है, ठीक है, this is a small c. आप जरा रन करो, रन हो जाता है. And now if you want to see the variable, you can see it. Okay. So try avoiding taking C as a variable name because C is acting like a function in R. कुछ और function दिया जा सकता था, COM या whatever, but they have just given C. So C stands for your combine. चलो एक और वेरिएबल डिजाइन कर लेते हैं. लेट्स डिजाइन अनदर वेरिएबल, वेरिएबल 5, and let's put some values. Now let's say variable 4 equal to variable 5. अब देखते हैं क्या होता है. So or before I do false or something, let me say greater than. तब तुम लोग समझ में आएगा. False 2 ऐसा क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? Yes, because it is doing one-on-one comparison. So it will compare 2 with 7. Is 2 greater than 7? Answer is false. Then it will compare 60 with 50. Is 60 greater than 50? Answer is true. Is 20 greater than 90? Answer is false. Is 34 greater than 30? Answer is true. So basically, if you want to compare one-on-one elements. Similarly, you can compare your less than also, or equal to also, or not equal to also. अगर लेंथ चेक करनी है तो यूज कर लो लेंथ फंक्शन. So remember this is equivalent to your len function in Python. ठीक है, it will give you number of records. Length function will give you number of records in your data. क्लास में इतने कम लोग क्यों, बाकी लोग कहीं चले गए क्या अड़क पूना? देख रहे हैं, चलो ठीक. So length variable. एक नया वेरिएबल. अच्छा, हाउ टू डिलीट अ वेरिएबल. पाइथन में कैसे डिलीट करते थे? पाइथन में del कर देते, राइट. यहाँ पे rm कर दो. rm will remove the variable. So for example, as of now, एक सेकंड सब लोग प्लीज यहाँ पे देखो. वेरिएबल 5 exist as of now, exist करता है. But now if I say rm variable 5, so rm will remove. Now if I run variable 5, I should get an error because उसको तो मैंने already delete कर दिया, right? Variable 5 not found. So this rm is equivalent to your del in Python. ठीक है.
It is to delete the variable. So whether you want to delete a list or any variable or data frame or whatever, RM will remove it. Okay, let's create another variable. एक variable create कर लेते हैं. Let me say variable 6 and put some numbers. Just put some numbers, whatever numbers you think. थोड़ा ज्यादा नंबर डाल दो. कम भी डालोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है. Okay. Suppose you want to check if a particular element is present. Okay. And imagine this is this variable 6 which I have created. It doesn't contain only 10, 15 records, but it contains some 100, 200. And you want to check whether a particular element is present or not. So let me say, let me say I want to check if 13 is present in variable 6 or not. Okay. So what I'll say 13 percentage in percentage and I'll say variable 6. देखते हैं क्या आंसर आता है. You get answer as false because probably 13 is not present. Now if I say is 60 present, so if I say 60 percentage in percentage variable 6, अब देखते हैं क्या होता है. You get answer as true. Why? Because 60 is present. So if you want to check a particular element or a record is present, you can use percentage in percentage.
आगे बढ़े। Put something. Let me say, और एक another variable ही create कर लो, variable 7. कुछ भी डाल दो. दिवाली is coming. दिवाली की स्पेलिंग सही है. दिवाली is there. Okay. Few days. कितने दिन बाद है? 6 दिन बाद ना. 8 दिन बाद. Diwali is there after 8 days. ठीक है ना. Now if I say ncar var 7, देखें क्या होता है. So it will give you total number of characters. काउंट करके देखो क्या 30 कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस. डेफिनेटली होंगे. ठीक है. So Diwali is there after 8 days. So count how many of them, how many, what is the length? Length is 30. और अगर हम इस पर लेंथ फंक्शन रन करें तो लेंथ 1. ठीक है ना, बिकॉज इट इज जस्ट 1 थिंग. ठीक है. So n char is number of characters. So for example, so if you count from this D till your S, they are 30 including space. ठीक है ना, including space there are 30. One, two, three, four, five, six. Okay, one thing which you need to remember in R is that the major difference between R and Python is that in Python indexing starts from 1. Sorry, in R indexing starts from 1. Python में तो obviously 0. ठीक है. ये please एक बार यहाँ पे लिख लो. In R indexing starts from 1. बाजू में लिख लो Python it was 0. जब R से मैं Python में गया था तो मेरा दिमाग बहुत दर्द हुआ था. तुम लोग Python से R में आ रहे हो तो शायद तुम्हारा भी लोड आएगा. ठीक है. Because do you notice? So I am giving, so 1,6. So 1 is the starting position and 6 is your length. So it is selecting, it is starting from D. अगर यही सेम चीज हम Python में देते तो वो I से स्टार्ट कर देता, because D would have been 0, right? So in R indexing starts from 1. In Python it was 0. ये Python it was 0 ये तो तुम्हें बचपन से पता है, right? पता है ना बचपन से.
थोड़ा सा और देख लेते हैं दिस थिंग ऑन द टेक्स्ट डेटा. अरे बाप, समझ में आता है. One good thing in R is that the name or from the name, once you read the name of the function, you will get an idea what this function is going to do. तुमको जो काम करना है उस नाम का एक फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगा. So to upper, so do you notice it converts everything to your upper case. अगर to upper है तो to lower होना ही चाहिए. Correct? So to lower will convert everything to your lower case. So this will convert everything to your upper case, and this will convert everything to your lower case. एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं. Put some numbers and repeat some numbers. Okay. Now, are there any duplicates in this variable 8? Answer is obviously yes, there are duplicates. बस क्या करो, यूनिक फंक्शन डाल दो, बोल दो वेरिएबल 8. So unique function will do what? It will remove the duplicates. It will make everything unique. अब चाहो तो चेक कर लो. Duplicates remove. So unique will make it unique, which means it will remove the duplicates. ठीक है, और देख लो होते हैं क्या कर सकते हैं. I'm just checking my code.
जरा अपने वेरिएबल को चेक करो, देखो क्या कर रहा है इसने। So basically it would have created a sequence of number from 5 till 13. ठीक है ना? If you want to create the sequence of numbers. असेंडिंग डिसेंडिंग का फंक्शन होगा क्या? हो सकता है। मैं असेंडिंग डिसेंडिंग में बताता हूँ कैसे होगा। I'll tell you. डायरेक्ट फंक्शन नहीं है मेरे ख्याल से। मीन करके तो डायरेक्ट फंक्शन होगा। सपोज यू वांट टू फाइंड द मीन, तो लेट मी से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, numbers, and you put some numbers, whatever. सपोज आई डोंट नो इसका मीन कितना है, ऑब्वियसली आई डोंट नो, सो मीन करके एक फंक्शन आएगा, नंबर्स आएगा, एंड इट विल गिव यू द मीन। एंड मीन के साथ राउंड फंक्शन भी आ ही जाना चाहिए, राउंड है। So if you want, so over here the answer is 18.2222 something. So let me say you want answer only after till 2 digits till decimal. Use your round function. ठीक है? If you do not give this to, एक सेकंड प्लीज देखो सब लोग यहाँ पे, so वो सिर्फ इंटीजर्स में आंसर दे देगा, है ना? अगर मीन है तो क्या मीडियन होगा? देख लेते हैं। वैसे मीडियन फंक्शन है तो सही, लेकिन ये कितना इफेक्टिव है इसका थोड़ा सा मेरे को डाउट है, बट देख लेते हैं। मीडियन इज 10 पक्का, 5 6 9 10, 2 बार 10 आ रहा है ना, तो मीडियन 10 इसका 10। सपोज करो मैं यहाँ पे एक और नंबर डाल देता हूँ 100, अब आओ 200, अब कितना आएगा इसका मीडियन? 20। ठीक है ना? तो चेंज करो, सो मीडियन फंक्शन इज वर्किंग। Let's see क्या standard deviation है, and anyway when we create a data frame now, so all these functions get attached. So data frame, sorry, standard deviation इसका आ जाएगा std करके, कोई फंक्शन नहीं है तो sd करके होगा। अब यहाँ से ना प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, पाइथन में std लिखते हैं, यहाँ पे शायद sd है, तो तुम कभी पाइथन का कोड आर में लिखोगे, कभी आर का कोड पाइथन में, और कई बार समझ में नहीं आएगा यार गलती क्यों हो रही है। ठीक है, बट विद टाइम समझने लगेगा, बिकॉज सी नेचुरली मैंने क्या लिख दिया, एसटीडी लिख दिया, राइट, बिकॉज पाइथन में एसटीडी होता है, यहाँ पे एसटी, तो इसके आगे कमेंट लिख लो, दिस इज फॉर योर स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, सो ये नंबर्स में क्या क्या चीजें हैं? इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ सपोज करो आई वांट टू एंटर वन मोर एलिमेंट इन दिस थिंग, तो कैसे कर सकते हैं? अपेंड, सो से अपेंड नंबर्स, कौन सा नंबर डालना है? लेट मी से मेरा मन है 1000, तो क्या लगता है 1000 अपेंड हो गया? हो गया? अगर तुम देखोगे तो वो नहीं हुआ है,
See, Sablo, please, 1 second, guys. Everyone, please have a look over here. Now, this is where a small difference. वैसे तो छोटा बोल रहा हूँ, but it is a very big difference. So normally in Python, if you write this much, it would have made the permanent changes. But over here, if I again print the numbers, you will notice 1000 is not appearing. Why? Because it is not in place. तुमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, append करना पड़ेगा और वापस उसमें save करना पड़ेगा. Now changes would be reflecting. So now if I run the numbers, 1000. Okay. So append will append, but Ajay, run this line and then you will see कि Python, the way it has been designed, काफी अच्छा डिजाइन किया है compared to R. In Python, what was the function of shift tab? Documentation उससे related उसके और क्या options है वो क्या यहाँ पे चलता है? देखो यहाँ पे will shift tab work? I don't think so. कुछ नहीं होएगा. So whatever shift tab used to do in Python, यहाँ पे भी होगा लेकिन बड़ा अलग तरीके से. Question mark. You need to ask a question. भाई ये करता क्या है? तो वो फिर बताएगा. इधर vector. Now documentation what they have given is very good. Okay, so you read this thing. What append will do? Append x values after length whatever after subscript. देखो. So this is the again one parameter you can invoke it. So for example, now let me say I want to append 5,000 and after equal to length this. So I'll say after equal to, let me say 3. देखें क्या होता है. Now let's see the numbers. So can you notice 5,000 has been appended after the third element? ठीक है ना? So दिया है इन लोग ने, ऐसी बात नहीं है. या इन्होंने दिया था पाइथन में और अच्छे तरीके से, जैसा कहना चाहूँ. So question mark will give you the documentation related to this. Sometimes single question mark may not help, so double question mark दे देना. Sometimes that is just based on my experience. So question mark is equal to your shift tab in Python. और क्या क्या small functions आ रहे हैं within the same function. Done. So as a data scientist, most of the time you are required to work on the data frame, right? So let's focus on the data frame. Why? Because before building any model, data cleaning
has to be done, right? So let's focus on data frame and then probably we will move towards the for loop, if loop and other thing. या चाहो तो हम लोग पहले for if भी कर सकते हैं, then probably go to data frame, जैसा मन करे. क्या करने का मन है? Data frame या for while करने का मन है? चलो for while कर लो. But for and while करने से पहले फिर if conditions देख लो, because that makes sense, so that you can use the conditions inside your loop. Okay, so let's see our conditional statements. Conditional statements तो same ही है. That is your if. Okay, that is your if. अच्छा, बिफोर आई गो टू कंडीशनल स्टेटमेंट ना, एक सेकंड ये काम करते हैं, जरा प्रिंट स्टेटमेंट और देख लेते हैं, है ना. सो लेट मी से नेम इज, किसी का भी नाम ले लो, मोहन. कोई मोहन वैसे करके है नहीं. लेट मी से एंड हिज सैलरी इज समथिंग. ठीक है, एंड बस इतना काफी है. जस्ट ओके, सो लेट मी से print. So I am writing a code which would have worked in Python, right? So if I say print, his name is, and I would have given name, and then if I would have said his salary is this much, his salary is salary, right? So if this line was written in Python, तुम लोग मत लिखो please, इससे भी यहाँ पे देखो, don't write, don't do anything. If I would have written this thing in Python, I would have not got any error, correct? So what it would have written, it would have printed his name is Mohan and his salary is whatever, right? But क्या यहाँ पे ये चीज वर्क करेगी? एरर दे देती है, देख रहे हो, एरर दे देती है. सो अब यहाँ से ना मुझे आर से थोड़ा सा चिढ़ आती है, बिकॉज ये चीज, जो चीज बहुत इजी हो सकती थी, उसके लिए तुम्हें बड़ा थोड़ा लंबा सा ट्विस्टेड एक कोड लिखना पड़ेगा, तुम्हें कॉन्कैट करना पड़ेगा. ठीक है, सपोज बिफोर गोइंग टू दिस थिंग, लेट मी से if I want to print this thing, print name. If I want to print name, it will obviously print the name, right? If I want to say print salary, it will print salary. So salary उसने ऐसे print कर दिया, ठीक है, no problem. Now if I say print salary comma name, तो क्या वो print करता है? Let's see. प्रॉब्लम हो जाता है, दो वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट नहीं कर पा रहा है. ठीक है, अच्छा चलो, तुम्हारे माइंड में आएगा, चलो सी देख के देख लेते हैं ना, कंबाइन कर लेते हैं, देखो क्या होता है. अब आ जाए, ठीक है ना. सो वेन एवर यू आर पासिंग मोर देन वन वेरिएबल, सी हैज टू बी यूज्ड. सी हैज टू बी यूज्ड. अब प्लीज करके देखो. And same thing, if I, so guys see the line number 91. एक सेकंड सब लोग प्लीज यहाँ पे देखो. See the line number 91. Does it give the proper output now? ठीक है ना, सी लगाना पड़ेगा. आर और पाइथन के अलावा तुम लोग कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहो, 15 दिन में सीख लोगे, 15 दिन से भी कम. अब डिपेंड कर रहा है, मतलब कहाँ से सीख रहे हो, कौन सिखा रहा है, उस पर भी. तुम लोग जावा भी सीख लो, सी भी सीख लो, हर लैंग्वेज सीख लो, मन करे तो. तुम कहाँ थे? अच्छा,
Now let's come to the conditional statement. Okay. सबका यहां तक हो गया guys? Done? Now, first of all, since you already know your Python language, तो मैं क्या करूंगा, एक हल्का सा Python का feel तुम्हें देता जाऊंगा so that you can replicate it in your R. Suppose if I want to write a if condition in Python, then what would I have done? So let me say I equal to 8. I equal to 8, and if I say if I less than 10, then print value is less than 10. Otherwise, what I would have done, I would have written else print value is more than 10. So this code in Python would have worked okay. ये मैंने अभी Python का लिखा तो obviously यहाँ पे error ही आएगा, but almost everything. So print this thing, and then let me say you say something, print inside if and print time pass, whatever. So all these 3 lines were part of your if, correct? And you had to maintain the indentation. You had to maintain indentation. Till the time indentation was maintained, it was part of if. And then this, the first E of your else would have been directly under your I of your if, correct? So how do you come to know that which lines are part of your if? Till the time indentation is maintained. But R may, one good thing is you don't need to worry about indentation. Indentation may be anything. So in R, the way I'll write the code is something. So if I have to write the same code, I would have written something like this. If I less than 10, तो मैं एक bracket open कर देता. So can you notice there are 2 brackets, one and one over here. Till the time, now you write anything, whatever you write within this bracket, from your open to close bracket, it would be taken as part of your if. जैसे ही bracket बंद होगा, it means if अब बंद हो गया और else start होगा. So for example, I want to print these things, so I would have written something like this. भाई यहाँ पे तुम आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ. इंडेंटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, जानबूझ के इंडेंटेशन चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना. इसको इधर पीछे कर देते हैं. नाउ लेट्स सी क्या ये रन होता है. If I is less than 10, normally the run हो जाना चाहिए. Unexpected symbol and if. क्या एक सेकंड. If I is equal to 10, let me see. कुछ तो इशू हो रहा है. क्या बोला? अनएक्सपेक्टेड सिंबल इन इफ आई. आई तो मैंने डिफाइन करा है ना. आई इज इक्वल टू 8, इसको डिफाइन कर सकता है. वैसे ये एरर वहां से नहीं हो रहा है. अच्छा, पता है क्या, ये मेरे ख्याल से कंडीशन को ब्रैकेट में एक्सपेक्ट कर रहा है. अब सही जाएगा. नाउ दिस इज वन मोर चेंज, ठीक है ना. So if I is equal to 10, so it is not going. So let me say if I is less than 10. अब आ गया. So now what are the changes which you need to keep in mind? That when you are using your R, the condition should be given in bracket. But in Python you don't give condition in bracket. ठीक है. अब
प्रॉब्लम क्या आएगा, आर सीखने के बाद 10 दिन आर करने के बाद तुम जब पाइथन का कोड लिखोगे तो तुम उसे ब्रैकेट में डाल दोगे और वहां पे एरर आएगा। ठीक है, तो ये सटल चेंजेस हैं। नाउ सो डू यू नोटिस in R there is no problem of indentation. It is not giving any problem related to indentation, but your condition should be in bracket. Suppose now this is the if part. Abhi koi din coding mat karo, just try understanding it. Now I want to introduce the else part, so I'll say else, right? So later on we'll put multiple else, but as of now let's just put else. Else, let me say, इन 3 लाइन को यहाँ कॉपी कर लेते हैं और देते हैं इधर डाल, else print value is greater than 10 and inside let me say else, and let's change the value. Value of I was 8, and let me say the value of I is 20. Let's see what happens. So it should go in else. It goes in else. Can you notice value is greater than 10 inside else or time pass or whatever. Now one thing which you need to keep in mind is, एक काम करो, अच्छा कुछ लोग थोड़ी गलतियां करेंगे उसके बाद सीख जाएंगे, इतनी कोडिंग करो, देखने किसको एरर आती है। ठीक है, so if and else, please go ahead and try coding it. Change the value of I, so it should go in either if or
किसी को भी एरर नहीं आया? अच्छा, आया? हाँ हाँ. So basically, I could have told it upfront, but I wanted people to struggle. So ये अब याद रहेगा. अब देखो हो क्या रहा है. अगर so everyone please have a look. So the if bracket is starting at line number 105 and it ends at line number 109. Wherever your if ends, from the very same spot you should write the else. Otherwise, वो बड़ा अजीब सा एरर देता है. अब समझ में नहीं आएगा तुम्हें ये क्यों आ रहा है. सब कुछ तो बराबर है ना. तो ध्यान क्या रखना है, जहां पे इफ खत्म होगा एल्स वहीं से स्टार्ट होगा, बस उतना ही ध्यान रखना है. ठीक है. वेयर एवर योर इफ एंड्स, at the very same spot your else should start. Okay, and that is why I was saying that I am expecting few errors. जो कॉपी पेस्ट में बहुत अच्छे हैं उनको नहीं आया होगा, जिन्होंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया होगा, थोड़ा एक्सप्लोर किया, शायद उन्हें आ गया होगा. ठीक है. बट दैट इज हाउ वी लर्न. Okay. Let's do one thing. So if and else is clear, let's try to write a code which contains more than one else. Okay, more than one else is required, let me say. तो कर लो भाई एक काम. क्या कोड लिखे इसे. Okay, equal to okay. चलो लिख लेते हैं. Print, get up and go to work. और लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए लिख दो print, don't be lazy. Sunday was just yesterday. ठीक है. आप सपोज करो मिड वीक आ गया है. सो इसके लिए इफ एल्स इफ करना पड़ेगा हमें. एल्स इफ डे इक्वल, आई थिंक मंडे को एक कोट्स में डाल दो. डे इक्वल टू वेडनेसडे. Just 2 more days for weekend. And have a small party today. 2-3 दिन से काम कर रहे हो, थक गया होगा. Else, let me say Friday. Friend, we can start here. थोड़ा मोटिवेट करने के लिए उसको बोल दो don't do any work today. ज्यादा काम कराओगे टीम मेंबर से तो लोग गुस्सा हो जाएंगे. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसा बोल देंगे भले काम करा ले. ठीक है. अब देखते हैं भाई साहब ये कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या होता है. अनएक्सपेक्टेड दिस किधर प्रॉब्लम आ रहा है भाई. सो डे
Okay. So basically, I have given just single equal to. Let me say now, if I give Friday, so Friday वाला message print हो जाना चाहिए. We can start here. Don't do any work. मैं ऑफिस में भी ऐसा होता है, लोग सवेरे की मीटिंग फ्राइडे को लोग आते ही नहीं है. और मनी मन सब चाहते हैं कि आज हम भी ना जाए, वो वाला भी ना है, मीटिंग ना हो. स्टैंड अप मीटिंग ही लोग अवॉइड कर देते हैं. Okay. So now let me say if someone enters Monday, Wednesday or Friday, we know what will happen. But अगर किसी ने Sunday enter कर दिया तो क्या होगा? So if someone enters Sunday, you will not get any output, correct? So what we can do is we can attach one else. Else, we can say print not the correct input. कुछ तो print करा दो if you want to print something. So else if will check the condition. So over here you have else if. Python में क्या था? elif. So almost same. Let me know once you've done it. Done? Clear? So now do you, I hope people are going on the right track. कोई challenge आ रहा है? Any challenge? नहीं ना? You understand what is if, you understand what is else. Only thing is a little bit of syntax is being changed. एक चीज का ध्यान रखना, in R condition is given in the
bracket. ठीक है? In Python, it was without bracket. In Python, you have to maintain indentation. In R, no indentation. Both R and Python are case sensitive. Now let's discuss our loops. How many loops you know in Python? While loop and for loop. They are do while था Python. मैंने तो नहीं करा. But हो सकता हो. I am not denying it. But while and for तो था. हमने करा भी है. And while and for in Python and R are exactly same. Almost same. The way and the logic are same. So let's discuss our while loop. So suppose karo, let me say, if I want to print numbers from 1 to 20 in Python using while. ठीक है, सब लोग प्लीज एक सेकंड यहाँ पे देखो, अभी कुछ मत करो. If I want to print numbers 1 to 20 in Python using while, so what I would have done, I would have said, let me say num equal to 1. Then I would have said while num is less than 20. Then I would have said indentation, obviously, print num, and then I would have said num equal to num plus 1. These lines would have been written in Python probably. ठीक है, और अगर 20 तक प्रिंट कराना था तो यहाँ से less than or equal to लगा. ठीक है. Now how to write the same thing in R? So I will just comment out these things and I would have said, these things would have been in your R. Over here in Python, sorry, these would have been in Python. R में कैसा करेंगे? So again, num equal to 1, let me say. And I'll say while condition दे देंगे bracket में num is less than or equal to 20. फिर I will open one bracket which will indicate the body of while. Then I'll say print num, and then I'll say num equal to num plus 1. रन कर दें. हो गया? So everything is same. Only thing is, while checking the condition, you have given the bracket and you don't need to maintain any indentation. ठीक है ना? So line number 130 to 135 are in Python, and the same thing I have written in R. And if you do not give line number 140, तो तुमको पता है क्या होने वाला है? Infinite loop में जाने वाला है. चाहो तो करके देखिए. अच्छा एक सेकंड गाइस, सपोज इनफाइनाइट लूप में जाता है तो पाइथन में क्या करते थे? कर्नल को रीस्टार्ट करते थे. यहाँ पे रीस्टार्ट करने का जैसा ऑप्शन तो है लेकिन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. सब लोग देखो, सेशन में जाओ एंड टर्मिनेट आर और रीस्टार्ट आर. सपोज इफ योर आर हैंग्स, ठीक है ना, तो आइदर टर्मिनेट इट और रीस्टार्ट इट. ठीक है. Done. Very easy. Now let's quickly explore our for loop. एक रिक्वायरमेंट डाल देते हैं.
print square of all the numbers given. Okay, and let me say the number list is something like this. Put some numbers, ज़्यादा बड़े भी नहीं. And so how would I have written? So I will say for let me say J in number list. Put this thing, open the bracket, print number is J. The square is J caret 2. So guys, do you notice it gives something like this? So again, the condition part should be in your bracket, and the loop would be from your curly bracket to another curly. रेंज फंक्शन डायरेक्टली आता है. इक्विवेलेंट, इसका कोई इक्विवेलेंट तो जरूर होगा, मैं बता सकता हूँ. रेंज फंक्शन है तो सही, देख लेते हैं क्या करता है. वैसे आर में एक चीज अच्छी है, नॉर्मली जो तुम्हें करना होगा ना, उस नाम का एक फंक्शन लोगन बनाया जरूर होगा. हाँ है. So range function returns a vector containing minimum maximum of the all the given argument. So let's say range 10, 20 with a step size of 3. Let's say क्या करता है, 3 से 20 करा इसमें. नहीं, इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो. अच्छा पहले देखेंगे अगर सिर्फ 3 से 20 करते हैं तो क्या करता है. सिर्फ 10, 20 करता है. नहीं, कुछ तो और है. रिटर्न्स दी. अच्छा रेंज तुम्हारा एम क्या है? सो ये रेंज पता क्या कर रहा है, ये मिनिमम एंड मैक्सिमम रिटर्न करता है. So let's say you have 1000 numbers. So what is the range? Range means what is the minimum value and what is the maximum value. तुम्हें क्या करना है? Suppose करो if I give the range function on this range on number list, तो इसका आंसर आना चाहिए lowest number is 3 and the highest number is 40. So इसका आंसर आ जाना चाहिए 3, 40. आ गया? What is the range? Range means the lowest and the greatest, the smallest and the largest. ठीक है ना? That is what the range is. ठीक है? तुम्हें क्या करना है ये बताओ. तुम्हें वो करना है, तो तुम्हें वो करना था, तुम उसके लिए उतना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सीक्वेंस डाल दो. ठीक है? अब देखें सीक्वेंस में कुछ और एक्स्ट्रा पैरामीटर लेता है. सीक्वेंस क्वेश्चन मार्क. अगर यहाँ पे देखो सिर्फ तुम्हें अगर
क्रिएट करना है तो तुम ऐसा कर दो, सीक्वेंस 1:20, so it will create a sequence of number from 1 till 20, or if you want you can create it from whatever number, so let's say 6:20 or whatever. So sequence 6, तो इसमें 1 2 3 क्यों करा? 6 से क्यों? 1 2 3, एक काम करना पड़ेगा, सीक्वेंस लिखना पड़ेगा इसका, क्या करता क्या? सीक्वेंस फ्रॉम 1 to this thing, नहीं वो तो चलो मैं समझ सकता हूँ, सीक्वेंस 6 to 20, 6 to 20 में 1 से 20 से तो मैं समझ में आ रहा है, 6 to 20, 6 to 20 आई थिंक। हाँ, अब ये प्रॉब्लम आ रहा है, देखो सपोज को मैं 6 से 20 चाहिए तो 6,20 करा, ठीक है ना, तो 6 से स्टार्ट किया 20 तक गया, और सपोज करो अगर अब मैंने यहाँ पे 2 डाला तो कुछ जाएगा, तो दो दो के स्टेप साइज में, ठीक है ना, दो दो के स्टेप साइज में गया, एंड ऑब्वियसली अगर तुम 3 कर दोगे तो 3 3 के स्टेप साइज में हो जाएगा। अब ये चीज है ना, बड़ा प्रॉब्लम देगी तुम्हें, प्रॉब्लम इन पाइथन में हल्का सा चेंज, यहाँ पे हल्का सा चेंज, ठीक है ना, तो वो चीज है, एज अ ह्यूमन बीइंग याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। बट कीप वन थिंग इन माइंड, व्हाट एवर यू वांट टू डू इन आर, उससे रिलेटेड एक फंक्शन 99% ऑफ द टाइम एग्जिस्ट जरूर कर रहा होगा, ओके। तो अब इतनी दिनों से मैं तुम लोग को आर पढ़ा रहा हूँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज मेरे लिए कर दो। क्या एक्सरसाइज करोगे? बड़ी सिंपल सी है। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टोल्ड यू इफ, आई हैव टोल्ड यू एल्स, आई हैव टोल्ड यू इल्स इफ, आई हैव टोल्ड यू फॉर, आई हैव टोल्ड यू व्हाइल। नाउ टेक द सेम थिंग, take the same number list which you have created, okay, and do one thing, print the square for even numbers and cubes for odd numbers, इतना करो। so basically तुम्हें एक लूप में एक if and else कंडीशन लगानी पड़ेगी, okay, take the number list, print the square for even and cubes for odd। कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 5 मिनट बहुत हो गया।
Okay. So someone please put your code जिसको लगता है उसका सही है. दो लोगों का तो खैर सही ही है. Paste करो please code अपना. For others also. Okay. So Shreyas has pasted his code. Let's see what Shreyas has done. So now this number percentage two. If remainder is zero, it means it is a even number. I think this should work fine. Number list is not fine, so मैं number list कर देता हूँ. So it's fine. अब एक काम करो, क्या काम करोगे? ब्रेक ले लो, ठीक है? बट थोड़ा टाइमली आ जाना वापस. Take a break and after break let's continue with some more. Any problem, any issues, guys? Anyone who is struggling, not getting? So Saurav has also shared. I think Saurav, your code also looks good. Okay. So keep one thing in mind, the number of brackets you are opening should match with your number of brackets which are closed. जितने open होंगे उतने close होना ही है. Okay, now take your 20 minutes break. And after break, we'll continue with our coding. I think class timing is till 2:30 na? So we still have, after break also we'll get more than an hour of coding. में ज़्यादा problem नहीं आएगा after learning Python. It would move better quite fast.
कौन सा? This is another problem in R. Problem in R क्या है? वो देख रहे हो प्लस, जितने ब्रैकेट ओपन हुए हैं उतने क्लोज होने चाहिए, ठीक है? तो वो प्लस डाल रहा था, मतलब वो यूजर से कुछ इनपुट मांग रहे थे, दो मेरे को, तो मैंने क्या करा, कंसोल में ही दे दिया। तो अब पूरा, जैसे करंट का पास होता है जब पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, पूरा सर्किट अब कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट करने के बाद वो बोल रहा है एरर इन प्रिंट डिफॉल्ट देयर इज नो ऑर्डर। प्रिंट पेस्ट तुमने करा है, तो चलो पेस्ट भी सही,
Case number is this else. यहाँ पे 2 ब्रैकेट बंद किए तुमने, तो यहाँ पे तो ये तुम कोड ये पढ़ा नहीं होगा पर तो उसकी फोटो रखता तुमने। I think we answered it. नहीं बड़ा हो गया है। मैं तुम्हारी सेटिंग्स ठीक है, चलो फॉर दिस ये ब्रैकेट ओपन हुआ, इफ यहाँ पे 2 ब्रैकेट क्यों लगाए, एक ब्रैकेट लगाओ ना, इफ num percentage 2 equal to 0, this is print paste this. यहाँ पे ये वाला यहाँ एंड हो गया, ये वाला एंड हो गया, ये किस चीज के लिए, ये नम लिस्ट क्या है, लिस्ट है ना जो इसमें वेरिएबल कहाँ है, स्क्रॉल अप नहीं करेगा तो ठीक है। तुम्हारे जो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स का प्रॉब्लम है, वो देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट बन रहा है, यहाँ पे आके मैं देखूंगा, यहाँ पे उसको जैसे मैंने कंप्लीट किया तो वो आउटपुट है, कुछ तो प्रॉब्लम होता है, कुछ हल्की सी चीज यहाँ पे फॉर नम इन नम लिस्ट, तुमने ये ब्रैकेट ओपन किया, इफ नम परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, फिर तुमने ये करा, फिर तुमने ये देखने में तो सही लग रहा है। हाँ यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला ब्रैकेट तुम्हारा यहाँ पे डालो, अभी आएगा तुम्हारा, ठीक है।
Okay, guys, so let's get started. So what we have done, we have seen our if, we have seen our else, multiple else if, and then we have seen our loops, for loop and while loop. Now let's try to do one thing. Let me say for ये वाला प्रोग्राम ले लेते हैं. And ऐसे if I is greater than 15, if I is greater than 15, then I'll say break. Okay, so break समझ में आता है? Not I, if num is greater than 15, then you break. कोई आउटपुट क्यों नहीं आ रहा भाई? अच्छा, एक यहाँ पे और print num equal to num plus 1. If num is greater than 15, then break. क्यों नहीं आ रहा भाई? उसको मैं ये हटा देता हूँ. चल मैं प्रिंट क्यों नहीं कर रहा? कुछ तो प्रॉब्लम हो गया. ऊपर कहीं से प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है. while num equal to 1, num less than equal to 20, print num equal to 1 plus 1. अभी आया. ठीक है. हाँ, let me say this thing. So पहले भी कोड सही था, बट ऊपर से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, राइट? सो ब्रेक. सो द function of break is same as in your Python. As soon as the break is encountered, it will come out of the condition. It will come out of the loop. ठीक है? So break will make your counter come out of your loop. ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया क्या सर? यार जी, तो चलो, इंडिया का पहला मैच कब है? किसके साथ है? 18 तारीख को पाकिस्तान के साथ है. फिर बेइज्जती होगी. कब? 18 को है. 18 मतलब परसों. कितने बजे से? मतलब प्रैक्टिस मैच है या सच का है? प्रैक्टिस करूँ. हे भगवान, बेइज्जती पक्की है. हैं? शमी फॉर्म में है. चलो, भगवान करे. अब तो मन करता ही नहीं, इतना सब बेइज्जती हो गया देश की. चलो अच्छा, तो ब्रेक स्टेटमेंट समझ में आ गया. नाउ लेट्स डू आवर क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है ना? यूजर डिफाइंड फंक्शन. सपोज इफ आई हैव टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन. तो पाइथन में क्या करते हैं? DEF लिखते हैं. फिर क्या करते हैं? नेम ऑफ द फंक्शन. सो लेट मी से यूजर डिफाइंड फंक्शन टू add two numbers. Suppose करो, एक सिंपल सा ले रहा है. Then I would have said def and let me say add number, and then you would have given num1 comma num2, and फिर तुम क्या करते? कोलन दे देते, करेक्ट? And you would have said, let me say result equal to num1 plus num2,
and then you would have said print result. ये code Python में काम कर जाता, correct? Now, if the same thing I want to do, so the above code is in Python. Don't try to replicate it. But if I want to do the same thing in R, तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे इस बार एक word function लेना पड़ता. मैं कुछ ऐसा करता, add num, and so def indicates that you are creating a function. Over here, you would have to write function. You have to write function and then num1 comma num2. Then whatever you want to do is save. And obviously you have to open a bracket which will indicate your this thing. यहाँ पे कर दो this and present. Okay. Now you know that function will not do anything till the time you call the function. Calling the function is same. Let me say 10 comma. Let's see what happens. You get answer as 44. So जो काम def कर रहा था, it is done by your function. Only thing is यहाँ पे function का नाम left hand side में आ रहा है, वहां पे def के बाद में आ रहा है. Rest everything is same. Well, let's write one more function. So at line number 188, you are giving call to the function. So consider I want to add and subtract both. I want to add, subtract in both. So let's do one thing. Let me say add and subtract करके एक function create कर लेते हैं. And function का नाम वापस यही दे देते हैं. Then let me say addition result is equivalent to your num1 plus num2. Then let me say subtraction ka result is your num1 minus num2. And then let me say print addition is addition result. Print subtraction plus subtraction result. Close the bracket. Now give a call to the function. Give something 70 and 59. Let's see what happens. Could not find addition.
अच्छा हाँ, ये एक प्रॉब्लम आ गया था यहाँ पे. ओके, so goes fine. Okay, addition is this, subtraction is this. So I passed 70 and 59. So if I add 70 and 59, what is the value? उसको देख सकते हैं, correct? 129. So 70 minus 59 कितना है? इसमें 11 तो तुम्हें पता है, बट यहाँ पे एरर आता हुआ दिखता है. ठीक है, सो एडिशन रिजल्ट में एरर नहीं आता है, बट सब्ट्रैक्शन रिजल्ट में एरर आता है. क्या डिफरेंस है दोनों में? करा है ना? So can you notice at line number 192 I have used arrows 2 times. So basically this has been made your global. याद आता है? A variable, if a variable is global, it can be used outside the function also, or class you can say. ठीक है? So double arrow is making this addition result as your global, and that is why when you want to see the addition result, you are able to see it. When you want to see the subtraction result, you are not able to see it, because subtraction result is not a global variable. Getting? Acha, now see, basically there is one function factorial. I want to discuss this function. Factorial function क्या करेगा? Factorial निकाल देगा. ठीक है? So there is already existing function in R. Python में भी था, right? np.factorial और math.factorial, right? But तुम लोग इस function का use मत करो, factorial. तुम लोग एक खुद का प्रोग्राम लिखो. Write a function which will find factorial of a number. ठीक है? Which will find factorial of a number. So I have told you about loop also. I have told you about if else also. User defined function also. Please write. So basically a recursive function. Python में करा हुआ है, right? कोई same logic replicate करने की कोशिश करो.
उत्कर्षा का कोई अपडेट आया क्या रिगार्डिंग टुमारोज क्लास? ठीक है, आएगा थोड़ी देर में I guess. Let me know जिसका हो जाता है. Please do a boundary check. Factorial 1 is 1. Factorial 0 is also 1. हो गया?
देखता हूँ। रिटर्न फंक्शन चाहो तो यूज कर सकते हो रिटर्न। सो व्हाट डज रिटर्न स्टेटमेंट डज? लास्ट में जो चीज रिटर्न करनी होती है, राइट? So the usage of return is same as in your Python. Okay. So if you want to return something, use your return. Okay, so people have shared their programs. Okay. So people have shared on. मैंने एक छोटा सा फंक्शन लिखा है, देखो शायद तुम लोग का बेटर हो, बट मैंने एक छोटू सा लिखा है।
So almost same here. So what I've done, I've said function n, and then so some people are more innovative. मतलब उन्होंने zero के लिए भी check किया. So I'm just saying if n is less than or equal to 1, so return 1, and else I'm saying, so there is no check for negative numbers or whatever. So I'm negative number or decimal. If you want to create it more robust, probably you can put a check for all those things. Then fact equal to n into fact n minus 1, right? So n into n minus 1. So basically, let's say if the value of number is 5, so it will say 5 into 5 minus 1, that is 4. So 5 into 4 into 3 into 2 into 1. And then it will return the fact. कुछ लोगों ने approach किया लिया है. So what I have done, I am decreasing the numbers. 5, 4, 3, 2, 1. Some people are increasing the number 1, 2, 3, 4, 5, which is also, it will result the same thing. So nothing to, yeah. So fair enough. बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो. You can use your this thing also, loop also, or loop or whatever. ठीक है. Or you can use your while loop also. So the same thing can be done in multiple ways. अब थोड़ा सा जरा सा I want to explore data frames, which is the main thing. So what are data frames in Python? सबको याद है ना? जिंदगी बीत गई, Python में काम करते थे. So you are obviously very much habitual to data frames, but now let's do one thing. Let's try to create a data frame. ठीक है ना? Data frame which has 3 columns. Let me say ID column, ID, age, and salary, and let me say name also. Okay. जल्दी से create कर लेते हैं. नेम हटा देते हैं, इतने सारे नाम मैं कहाँ पे क्लिक करूंगा. ठीक है. So ID is C. Give some ID. Give the age, whatever age you want to give. तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Give some salary. सैलरी ज्यादा लोगों की, सपोज करो hundreds and thousands में है. 336, 7, 8, 9, 10. So everyone please have a look over here. सब लोग stop whatever you guys are doing. So what I've done is I have created 3 variables, or you can say 3 vectors, ID, age, and salary. Then to create a data frame, Python में data frame कैसे create करते थे? You used to say PD dot capital DA, ऐसे create करते थे. यहाँ पे कैसे होगा? Data dot frame, and everything is in small, and you pass your ID, age, and salary, store it in a variable employee data or wherever, and a data frame has been created. ID, age, and salary का data frame आ गया है.
ठीक है, प्लीज गो अहेड एंड क्रिएट इट। और इस बार के मैचेस किस पे आ रहे हैं? हॉटस्टार पे आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं? हॉटस्टार पे आ रहे हैं। इस बार जीतेगी इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल है? क्या बोल रहा है? मस्त में जीती है, हाँ। अब लगता है ये वाला छोड़ के वही वाला देखना पड़ेगा। जहाँ लोग अच्छा करें उधर ही वाला देखो। यहाँ तो सिर्फ पैसा चल रहा है। मुझे लगता ही नहीं इंटरनेशनल मैच के लिए कोई इंटरेस्टेड होता है। सब लोग आईपीएल खेल के पैसा भर लेते हैं। डन गाइस। अच्छा, अब डेटा फ्रेम तो क्रिएट हो गया। सो आई हैव क्रिएटेड आई मीन वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल थिंग एंड ऑब्वियसली वी विल टेक start working on a slowly we'll start working on a bigger data frame, right? We will do our data cleaning and sampling, सारी चीजें धीरे धीरे करेंगे। बट सपोज करो हमारे पास ये डेटा क्रिएट हो गया है एंड पहले बताओ सबका क्रिएट हो गया? एनीवन हु इज स्ट्रगलिंग? So I'm checking the chat window, no questions. Now, suppose this data frame has been created and now I want to do some analysis. I don't know how many rows, how many columns are there. तो Python में कैसे पता लगाते हैं rows and column? Shape ना, यहाँ shape वेप नहीं है, यहाँ पे dim function है. Dim stands for your dimension. So dim stands for your dimension. It will give you number of rows and number of columns. 10, 3. अब बताओ dim ज्यादा सही है या shape ज्यादा सही है? Dim stands for your dimension. तो जब बनाया गया होगा तब उसमें भी सही दिमाग लगा था, dim डाल देते हैं डायमेंशन। Okay. So suppose if I say 0 or let me say 1, तो क्या रिटर्न करेगा? It will return me number of rows. In R, indexing starts from 1. So when you're giving 1, it is fetching you this number 10. If you only want to get the number of columns, तो क्या कर दें? 2 डाल दें, yes. So it will give you number of columns. But number of rows के लिए एक अलग से function भी आता है, n row. N row and you give employee data. So it will give you number of rows directly. If n row is there, then n call should be there. So as the name suggests, n call will give you the n stands for your number and call stands for your column. So number of column. One good thing in R which I like is ये वाला function जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ. ये डेटा फ्रेम को बड़े अच्छे तरीके से दिखाता है. View. And it opens it in a new tab. कितना बड़ा data frame हो, it will open it. Obviously, if it's a very big, it will take huge amount of time, some memory issues. But this gives a good interface. ID, age, salary, whatever. And view, in this view, the V is capital. ये याद रखना है. View का V capital है. The V is caps over here.
If I want to see the name of the columns, तो क्या करना पड़ेगा पाइथन में? Dot columns, यहाँ पे call names. Now this function you can easily remember, call names will give you the name of the column. How do you select a column in Python? You use your dot function, right? Data frame dot column name, or you can give the column name in quotes also within the square bracket. यहाँ पे कैसे होगा? वैसे तो वैसे ही होगा. So if you want to select a column, first of all you need to tell from which data frame, right? So data frame is this, and then you use your dollar. Use dollar and press tab. It will give you name of all the columns. Select whichever column you want to select. Okay. Python में dot, यहाँ पे dollar. ठीक है. So dollar will select your column. Now let's say if you want to find the mean age, then invoke this thing. Okay. One thing keep in mind, in Python function was attached to the object. In R, function is existing on its own. वहां पे अगर मीन निकालना होता पाइथन में, तो पाइथन में हम क्या करते? I would have done something like this. In Python, I would have done something like this. I would have said dot age, and then I would have said dot mean, bracket open, bracket close. ठीक है ना? So mean was a function which was getting attached to your age. ठीक है? Had age been a non-numeric column, तो mean function नहीं आता, right? But over here, the mean function exists on its own, and within the function you are passing the data. ठीक है? तो यहाँ पे हम ये वाला चीज हटा देते हैं, ये कर लेते हैं. अच्छा, for example, your head function, it is same over here. Only thing is, instead of giving top 5 rows, it will give you top 6 rows. Head का ये age हटा देते हैं. Okay. If head is there, then tail has to be there. And it will give you last 6. ये थोड़ा easy रहता है Python से R में आने पे. At least logic part would be there. देखें अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो. So I hope people understand line number 240. Yes. So default it will show you 6 record, but if you give 2, it will show you only top 2 record. And similarly, if you say top 2 or 3, it will show you last 3 record. अब बताओ R अच्छी या Python? Python. अच्छा बताओ ज्यादा अच्छी कौन सी, जिसने बहुत बोला उसके लिए? Python. अभी R से ज्यादा मिले कहाँ की प्यार होगा ना, थोड़ी और मुलाकातें चाहिए. चलो, shall we move ahead? So what I'll do, I'll slowly keep on introducing the functions, है ना? अगर देखोगे तो सुबह से लेब तक बहुत सारे फंक्शन कर लिए. Maybe they are very small, but if you count all individual functions, so it may be around 50 to 60 functions. Okay. So how do you select a column? Answer is age. ठीक है. Correlation matrix. Let's not build a correlation matrix over here because I also have an ID column over here. But if you want to build the correlation matrix, you pass your same thing.
EMPLY. And this correlation matrix, the way you read, the way you interpret is exactly same as in your Python. Do you notice diagonal elements are 1 and the values below and above the diagonal are repeating? Okay. So this is nothing but your correlation matrix. Python में CORR था, यहाँ पे सिर्फ COR. This is your correlation matrix. So I'm making things very simple for you so that you can remember it. पाइथन में जब मैंने बताया था तो मैंने कोरिलेशन मैट्रिक्स एक्सप्लेन करी थी, तो वो टाइम यहाँ पे बच जाएगा. पीपल ऑलरेडी नो. Okay. And let me say, if you want to find the correlation between any two things, what you can do, let me say correlation this. Let me say, is there any correlation between age and salary? वैसे तो डेटा मैंने रैंडम क्रिएट किया है, तो पता नहीं क्या correlation आएगा. Correlation. Okay. If you want to find correlation between two variables, give variable a comma b. So to find the correlation, very simple. Soon we will see how to change the name of the columns, how to find the nulls and all those things, but I'll do it in a very simple way. So how did we start? We started with our building our data frame. So हमने अब तक अपना खुद का data frame build किया है, which is a very small data frame. Dimension, n row, n call, view call, names, head, tail, correlation. Okay. Now let's work on a little bigger data set. थोड़ा बड़ा सा data set ले लेते हैं. But as of now, a data set where जहाँ पे कोई nulls वगैरह नहीं हो, थोड़ा simple हो. And I want to introduce few more functions which can be used for your exploration. See, guys, when you are installing your R, what has happened? Some data sets have also got downloaded. जैसे Python में भी inbuilt data sets हैं. So similarly, there is a data set. Many data sets have been downloaded and are already existing. One of that data set is your empty cars. Try viewing your empty cars. View करके देखो जरा. Empty cars data set दिखता है? दिख रहा है? चलो अब इस पे स्टार्ट करते हैं, कुछ एक्सप्लोरेशन वगैरह करते हैं. Then I will take one more step and we'll try to read our own data set. External data set. Empty cars दिख रहा है? So this data set is already downloaded in your RStudio. So इसके आगे लिख दो, it's inbuilt. It's inbuilt data set. So you have inbuilt function. Similarly, DA data set inbuilt है. Now since it is an inbuilt data set, जिसने भी डाला होगा उसने उसका डॉक्यूमेंटेशन दिया होगा. जरा इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो. क्या है? Just try reading it. अच्छा, डबल इस पे ये देता है. Do one thing. Let's go for a single arrow. Sorry, single question mark. Let's see. Do we get some documentation? Okay. So, motor trend car road test. Please take 2 minutes and try reading. Try reading this much part. जितना मैं highlight कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक. यहाँ तक पढ़ लो. पढ़ रहे हैं लोग नहीं? चलो मैं ही पढ़ देता हूँ के लिए, ठीक है, वरना डाउट रहेगा. So motor trend car road test data was extracted from 1974 Motor Trend US magazine and comprises fuel consumption and 10 aspects of automobile design and performance of 32 automobiles. ये सब 93, 73, 74 के मॉडल से हम लोग पैदा किए होंगे.
So data frame with 32 observations on 11 numeric variables. Your MPG is miles per gallon. वहाँ पे miles, यहाँ पे kilometer. So 1 लीटर में कितना जाती है? Number of cylinder. DISP is your displacement in cubic inches, I guess. HP is your gross horsepower. DRAT is your rear axle ratio. Weight is your weight in pounds. LBS. QSEC is 1/4 of the mile time. VS is your engine, V shape or straight. AM is your transmission, automatic or manual. Gear is number of forward gears, and carb is your number of carburetors. ठीक है, ये सब उन्होंने कुछ कमेंट है, इन लोग को थैंक यू बोल दो और आगे बढ़ो. ठीक है, चलें. So let's try exploring it. So view your empty cars, you get all these things. Let's run some more functions over here. So let me say I want to just run few functions which we have already discussed so that they stick in your mind. Head, jaldi se tail function run kar lo, and then run your dim function. Dim will give you number of rows and number of column. Though you have read the documentation, you know, but 32 and 11, run your n rows and call. Now let's run our important thing, COR, on this empty class. Now this makes sense. Okay. So suppose you want to find which are the factors which increase the mileage or decrease the mileage. So does this correlation matrix helps? So you already know what is MPG. MPG is nothing but miles per gallon. So I think 1 gallon is 4.2 liters. And 1 mile, कितने kilometers का होता है? 1.6. So which factors are decreasing the mileage and which factors are increasing? सबसे significant feature कौन सा है? If MPG is your target variable, which seems to be the most significant one? Or which all seems to be the significant? Drag. मेरे ख्याल से तो weight सबसे significant दिखता है, because correlation is 0.86. Though it is in minus, but do you notice 0.86 is almost going towards 1. So it means if you increase the weight by 1 unit, then mileage will reduce by 0.86. So weight seems to be the very significant, and obviously negative significance. So if you are increasing the weight, mileage is going down. DRAT is 0.68. DRAT वैसे क्या था? Rear axle ratio. क्या होता है भाई ये मैकेनिकल वालों? हैं? इस क्लास में तो भर भर के मैकेनिकल वाले हैं. कौन है? बताओ क्या होता है? रियर एक्सेल रेशियो का क्या इम्पैक्ट है ऑटोमोबाइल में? Okay. Rear axle ratio. Rear means पीछे वाले टायर. Axle ratio. Axle balance है कि नहीं? ठीक है, मेक सेंस. वैसे तुमने जो बोला सुनने में अच्छा लगा, मुझे उतना समझ नहीं आया. ठीक है, बट तुमने सही बोला होगा. आई डोंट डिनाई दैट फैक्ट. क्योंकि सुनने में अच्छा लगा. So DRAT has a positive impact. So अगर उसने जो बोला अगर वो सही है, so it means we should get our wheels balanced, right? So ratio. So they should be balanced. Otherwise, probably the power transmitted to one tire and another tire would be different, and which may increase the this thing. So जितना अच्छा ratio होगा उतना अच्छा. So weight is having a negative impact. Okay.
horsepower. Okay, so horsepower again is decreasing your mileage. So if you want to have a more horsepower, obviously you have to compromise with mileage. You know? Cylinder. I think ये horsepower and mileage are internally. See, cylinder and horsepower are internally connected. I guess more the cylinder, more would be the horsepower. ठीक है? तो अगर horsepower ज्यादा रखना होगा तो cylinder तुम्हें ज्यादा रखना ही पड़ेगा. VS, what is VS? ये तो अपनी समझ के बाहर है. V shape और straight, what is the impact? कोई ऑटोमोबाइल वाला ही बताए तो बताए. ठीक है. And then DRAT हमने अभी डिस्कस कर लिया. Disposition again minus. I think disposition is also internally connected. ठीक है ना? Because disposition means how much your piston would move rather, right? इतना मुझे भी समझता है. ठीक है, तुम्हारा जो अगर इंजन का पिस्टन है वो कितना मूव करेगा. So if you have more cylinders, then disposition would also be higher and power generated would also be higher, right? So basically, if you are increasing the cylinder or disposition or horsepower, your mileage will go down. If you are balancing your drag, horsepower will increase. Gear, number of forward gears. So if you are having more gears, mileage is increasing. ज़्यादा gear होने से mileage increase करता है. ऐसा होता है क्या? Number of forward gears. Could be. Because if you are moving your vehicle in a higher gear, probably mileage would be higher than number of carburetors. ठीक है, so fair enough. So this is how you build your correlation matrix and you interpret your correlation matrix. Now, suppose karo, if there is a requirement, how many cars? So do you notice in your gear section, you have gears are your 3, 4, and 5. ठीक है ना? 3 gears, 4 gears, and 5 gears. How many cars belong to 3 gears? How many cars belong to 4 gears? How many cars belong to 5 gears? अगर ये मेरे को काउंट चाहिए हो तो कैसे मिलेगा? So how many cars are belonging to 4 gear category? How many cars belonging to 3 gear category? तो पाइथन में तो वैल्यू काउंट रन कर लेते है ना. यहाँ पे क्या रन करेंगे? देखिए, let me say table empty cars dollar gear. आया? So 15 cars belong to 3 gear, 12 cars belong to 4 gear, and 5 cars belong to 5 gear. चाहो तो मैनुअली काउंट करके भी देख सकते हो, है ना. So this is something equivalent to your value count in your Python. ठीक है. Let's do one thing. So what is AM? AM is your transmission, whether it's automatic or manual. Okay. Now, if I want to find something like this, how many gears for automatic and
how many for manual. करके देखते हैं. So what I can do is I can say, let me set table empty cars dollar am empty cars dollar कहता है गियर ना. कोई इस टेबल को रीड कर सकता है? बहुत सिंपल है. तो शायद तुमको लोग को रियलाइज नहीं हुआ है. द सेम थिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट योर कंफ्यूजन मैट्रिक्स. Yes, so if you give actual comma predicted, it will create you. So basically in your AM, so do you notice you have given AM first? So if you see from left to right, you will see your AM. AM contains two values, either 0 or 1, right? So there are 15. So what does this 0 stand for? 0 stands for your automatic. So there are 15 automatic cars which have 3 gears. There are 15 automatic cars which have 4 gears. There are 0 automatic cars with 5 gears, right? There are 0 manual cars with 3 gears. There are 8 manual cars with 4 gears, and there are 5 manual cars with 5 gears. ठीक है? So ऊपर से देख रहे हो तो gears, left to right देख रहे हो तो A. बिल्कुल सिंपल. ठीक है ना? So यही same function use कर सकते हो to create your confusion matrix. ठीक है? अब जरा पता लगाओ what is the position of, do the same thing with your cylinders, cylinder and AM. Cylinder and AM पे जरा build करते हैं. हो रहा है? चार सिलेंडर आ रहा है. एक मिनट देना. कुछ छोटी सी और चीज कर लें, छोटी छोटी चीजें. So for example, let me say you want to select only those cars
which are having 5 gears, which are having 5 gears. ये सेम चीज अगर मैं पाइथन में करनी थी तो हम कैसे करते हैं? हम कुछ ऐसे लिखते हैं empty cars, then I would have written empty cars dot gear equal to 5 और equal to 5 whatever, right? equal to 5 करते हैं ना, equal to 5, correct? हो जाता? हाँ या ना? यहाँ पे कैसे होगा? ऑलमोस्ट वैसे ही हो जाना चाहिए. देखो इसको उठा लो, इधर डाल दो. So इसको कमेंट कर देना. Don't try executing it. This is in Python. Let's say this would have been in Python. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे उठा लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं. डॉट की जगह पहले डॉलर डालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है. नहीं होगा तो कुछ और करेंगे. अनडिफाइंड कॉलम सिलेक्टेड, एम्प्टी नहीं, अनडिफाइंड कॉलम नहीं बोलता वो. जी गियर नहीं, तो उससे बोला एरर मैसेज नहीं. डेटा फ्रेम यहाँ पे वैसे तो अच्छा हम समझ गए, एक कॉमा चाहिए शायद इसको. ठीक है, मैं पता क्या हो रहा है. सी guys, let's do one thing. Let's come back. If you want, I think you can understand right now also. See, if I don't, everyone just have a look. If I don't give comma, it is giving me an error. And what is the error? Error is undefined column selected. So this condition, using this condition, you will select the rows, but you need to tell which all columns also. So I am saying comma and then I'm putting space. It means I want to select all the columns. ठीक है, पाइथन में भी ऐसे ही करते थे ना. आफ्टर डेटा फ्रेम कॉमा, सो दिस लेफ्ट वन वाज फॉर योर रोज और ये बाद वाला कॉलम्स के लिए था ना. सो दिस कंडीशन इज, यूजिंग दिस कंडीशन यू आर एबल टू फेच द रोज. बट इफ यू डोंट गिव कॉमा, सो वो समझ नहीं पा रहा बेचारा. कॉमा स्पेस, सो इट गिव्स यू द डेटा फ्रेम विद ओनली 4. अब देखो जो आउटपुट आ रहा है, डज इट कंटेन्स ओनली those things which are having 4 gears? देखो कहाँ गया गियर कॉलम है? हाँ, सेकंड लास्ट, ऑल 4. लेट मी से अगर मैं यहाँ पे 5 दे दूं तो 5 वाला आ जाएगा. अगर कोई 5 वाली होगी, है 4-5 है. ठीक है, सो गियर 5 5 5 5. ओके, प्लीज गो अहेड एंड राइट इट. अब ये चीज ऑलमोस्ट सिमिलर इन पाइथन एंड ओवर हियर, बट पाइथन में आई थिंक कभी कभी तुम्हें कंडीशन ब्रैकेट में देनी पड़ जाती है. एक दो कोड और कर लो एंड देन आई लर्न द क्वेश्चन. I can see some fatigue factor coming कुछ लोगों के चेहरे पे. अच्छा ना, अब मेरे को एक चीज करके दो तुम लोग. देखो क्या कर पाते हो कि नहीं. आफ्टर डूइंग पाइथन फॉर सो मेनी इयर्स, ठीक है, देखो I want to select only those cars which are having 4 gears and mileage greater than 120. This and this. I want to select only those cars which are having 4 gears and mileage should be greater than 120. माइलेज नहीं हो सकता. अच्छा, माइलेज 120 नहीं, माइलेज 120 नहीं, सॉरी, सही पॉइंट बोला लड़का, समझदार है. रुक जाओ. एक्चुअली मैं डिस्पोजिशन से कंफ्यूज कर गया. बट लेट्स से माइलेज ग्रेटर देन
mileage greater than 21. 120 माइलेज तो बहुत हो गया ना। कार में ही 100 कार में ही रहो, घर की जरूरत है। यूएस में कार चलाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन हो गया पक्का। चेक किया कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं गाइस? हाउ मेनी रिकॉर्ड्स व्हिच आर सैटिस्फाइंग बोथ दीस कंडीशंस? कितने? 15 रिकॉर्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, माइलेज को 30 से रिप्लेस करो, देखो कितने से कम होता है। ठीक। सो कैसे किया? एंड के लिए क्या लगाया? एंड सिंबल। लो हो गया, देखो कंडीशन सेटिस्फाइड है ना। अब पता है लोगों ने क्या किया होगा, मुझे पता है तुम सब लोग पाइथन बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो माइट बी यू हैव डन समथिंग लाइक दिस। तुमने कंडीशन को एक ब्रैकेट में डाली होगी, बराबर। यहाँ पे एक ब्रैकेट में डालोगे तो वो लेता नहीं है। भगवान जाने क्यों नहीं लेता है, क्यों ऐसा डिजाइन किया उन्होंने। ठीक है, अभी तो खैर उसने ले रहा है, ठीक है। या तुमने अगर पूरी सारी चीजों को एक ब्रैकेट में डाला होगा तो शायद इश्यू आ गया होगा। अभी भी ले रहा है वैसे तो, ठीक है। यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। पाइथन में शायद इश्यूज आ जाता है, ठीक है। empty gas greater than 4 and mileage greater than 21. और कोई कंडीशंस निकालना? What will this do? This will select the rows and select the columns. See, so basically, ये देखो, if I copy this thing, put it over here, remove this thing, and if I say rows, and if I select this thing, and if I say columns. Okay, so if you want to select first row, fifth row, ninth row, 10th row,
एंड इफ यू वांट टू सेलेक्ट फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम एंड सेवेंथ कॉलम, तो तुमने कैसा दे दिया, कोलन. So on the left hand side, sorry, I'll not say colon, but on the left hand side of comma, it will select all the rows, and on the right hand side, it will select all the columns. ठीक है ना? अब देखो क्या इसमें -1 वर्क करता है. So if you want to select the last column, we used to give -1. देखो क्या यहाँ पे -1 करता है काम? I am little doubtful. -1 क्या कर रहा है वो? It is not selecting the first column. It is not selecting the first column, starting with your second. So मैं एडवाइस करूंगा अभी के लिए माइनस ज्यादा यूज मत करो, वरना तुम पाइथन में गलती करने लगोगे. ठीक है, क्योंकि वहां पे -1 लास्ट से सेलेक्ट करता है. एंड व्हाई इट इज पॉसिबल इन पाइथन? बिकॉज इन पाइथन इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0. यहाँ पे इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 1 से. तो जब तुम -1 देते हो तो वो पहला कॉलम सेलेक्ट नहीं करता. सपोज करो हमने -2 दिया अब, या -3 दिया, लेट मी से, तो क्या आता है आउटपुट? सो इट इज स्टार्टिंग विद MPG, बट सिलेंडर HP. थर्ड कॉलम जो है ना, व्हाट वाज योर थर्ड कॉलम? डिस्पोजिशन. उस कॉलम को उसने हटा दिया है. नोटिस, इट इज नॉट सेलेक्टिंग द third column. So इसका भी अपना advantage है. Let's say there are many columns and you don't want to select that particular column. You just give minus over there. So it will remove that column. ठीक है ना? Now let me say I want to select all rows, and this is my original data frame. I want to select all the columns from HP till carb. So HP, what is the index position of HP? 4, because ये R है, R में काउंटिंग 1 से स्टार्ट हुआ, तो ये 4 हो गई. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 4 से 11 तक मेरे को जाना है. So what I'll do, I'll say empty cast, then I'll say comma, and I'll say C4:11. Let's see what happens. देखो आया, HP से लेकर काप तक आया. So what I'm doing, comma, and then I'm leaving it blank. It will select all the rows. और कहां से select करेगा column? 4:11. ठीक है guys, so I think we should end the session over here, है ना? In next class we will continue with our वैसे तो बहुत सारी चीजें बची हैं यार. It has just started, so many things to come. We'll continue with our data frame. So we'll try to read an external data frame. We'll see how to find the nulls, how to convert non-numeric to numbers, all those things. ठीक है, वो सारी चीजें करके देखेंगे, and then probably we'll move towards our plots and arrays, matrix. But I think आज के 4 घंटे में काफी सारी चीजें कर ली अगर हम शुरू से स्टार्ट करें, राइट? घर पे जाके एक नजर डाल लेना. वैसे आज की चीजें बहुत सिंपल हैं. ठीक है, सो आई एम नॉट आस्किंग एनीवन टू स्टडी. दिवाली का टाइम है, मस्ती कर लो थोड़ा. ठीक है.
और क्या कहते हैं, नॉर्मली मैं हमेशा बोलता हूँ घर में पढ़ो तो लोग बोर हो गए होगे तो मस्ती कर लो, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं आ रहा है, जस्ट एंजॉय, हैव फन, and I'll try to keep the things very simple. Whenever I put any command in R, I'll draw a parallel with Python so that you are easily able to understand and able to remember. Okay, okay guys, so with this I'll leave the session. Thank you for joining.